ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। दुर्गा सप्तशतीमा जम्मा 700वटा श्लोकहरू छन् र त्यो अध्याय 1 देखि अध्याय 13 मा बाँडिएको छ र त्यो श्लोकहरू पाठ गर्दाखेरि हामीले एकदम भक्तिपूर्वक र त्यसैमा डुबेर चाहिँ पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ र अनुष्टुप छन्दलाई हामीले पहिलाउनु पर्यो। अनि पाठ गर्दाखेरि अब कसैले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि एक एक अध्याय अथवा दुई अध्याय पनि पढ्ने गर्छन् र यो दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्दा चाहिँ सम्पुटित गरेर पढेको एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तो सम्पुटितको लागि त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हालेको थिएँ र जस्तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा रोगान शेषान पहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयन्ति, यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं, यो पनि गर्न सक्यो। अथवा सर्वै माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यो पनि गर्न सक्यो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, यो पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ 3टा भागमा बाँडिएको छ। जस्तो पहिलो अध्याय प्रथम चरित्र सिद्धिन्छ, त्यस पछाडि मध्यम चरित्र अनि उत्तर चरित्र भनेर हामीले यसरी गर्छौँ। र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, यो चाहिँ हामीले यसमा जप्ने मन्त्र भयो। ऐं भनेर चाहिँ पहिलो अध्यायमा सिद्धिन्छ, ह्रीं चाहिँ दोस्रो तेस्रो र चौथोमा सिद्धिन्छ, र क्लीं चाहिँ 5औं 6औं 7औं 8औं 9औं 10औं 11औं 12औं 13औं अध्यायमा गएर सिद्धिनुहुन्छ। र पाठ गर्दाखेरि कुनै एउटा सम्पूर्ण मन्त्र लिएर प्रत्येक श्लोकको पछाडि गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ मैले एउटा सम्पूर्ण मन्त्र लिएर पाठ गरिरहेको छु। यसो गरेर गर्दाखेरि अत्यन्त फलदायक हुन्छ र घरमा सुख शान्ति समृद्धि पनि हुन्छ र देवीले हामी सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। जय नाथ नारायण वासुदेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 अथ द्वितीयोऽध्याय। ओम अक्षसक् परशुं गदे सुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दतिं वस्त्रै प्रसन्नाननां शिवै शैरीविमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। आफ्ना हातहरूले अक्षमाला वञ्चरो गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुण्डिका दण्ड शक्ति खड्ग ढाल शङ्ख घण्टा मदिरा पात्र शूल पास र चक्र धारण गरेकी, कमलको आसनमा बसेकी, मुगाको जस्तो कान्ति भएकी, यहाँ महिषासुरलाई मार्ने महालक्ष्मीको नम सेवा गर्दछु। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हरि ओम। ओम मध्यमचरितस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छन्द शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थी मध्यमचरित्र जपे विनियोग। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूत् युद्धं पूर्णमब्ध शतं पुरा महिषेश्वरनामदीपे देवानां च पुरन्दरे। ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। तत्र सुरेर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलं देवान् इन्द्रो भुन्महिषासुर सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्।
यथापितं तयो तस्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवा विभवविस्तरं सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सुरेन्द्राग्न्यन्लिन्देनुदूनां श्रमस्य वरुणस्य च निशंसाधिकारं च स्वयमेवातिष्ठति सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भूमि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् एतद्वकथितं सर्वममरारि विचेषितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्तताम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इत्थं निश्चयं देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कौतुसम्भुत भृकुटी कुटिलाननौ सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ततोऽतिको पूर्णस्य चक्रिणो वदना तत निश्चकाम महत्तेजो ब्राह्मण शङ्करस्य च सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमहत्तेजस् तच्चैकं समगच्छत सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अतीव तेजस कुटं ज्वलन्तमेव पर्वतं ददृशुश्च सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदहुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तिषा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् यदा वृक्षां भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं यामिन चावं केशा बहवो विष्णुतेजसा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सौम्येनस्तनयोर्मिमध्यं चैन्द्रेण चाभवन् वारुणेन चङ्गोरु नितम्बशेषा भुव सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसुनं च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् तस्यास्तु दन्तसम्भूता प्रजापतेन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् रुभौ च सन्देयुस्तेज श्रवणा वनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् तदसमस्तदेवानां तेजोराशित्वमभवं तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादिता सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् शूलं शूलादिनिष्कृष्य तदुत्तस्य पिनाकधृतचक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पात्य स्वचक्रत सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् शङ्खं च वरुणशक्ति ददं तस्य हुतासन मारुतो दत्तवास्तापं बाणपूर्णे तथेषुधि सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् वज्रमिन्द्र समुत्पात्य कुलिसाद मराधिपद साक्ष्य घण्टा मैरावतात् गजात् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् कालदण्डा दमोदण्डं पाशं चाम्बूर्पतिर्ददौ प्रजापति साक्ष्यमालं ददौ ब्रह्माङ्कमण्डलम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् समस्तरोमकूपे सूर्येन्द्ररश्मिन् दिवाकर कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्या शर्म च निर्मलम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अर्धस्नं तथा शुभ्रं केयुराङ्क सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद्गिरिवैयकमनुत्तमं सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अंगुलीय करत्नानि समस्ता स्वङ्गिलिसुच विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अत्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं तदंसनम् अम्लान पङ्कजं मालं शिरशिरसि चापरम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् अदन्तजलधिस्तस्य पङ्कजं चाति शोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ददावशून्यं सूर्यापानपत्रं धनाधिपसेनस्य सर्वनागेशो महामणिबुभूषितं
सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् नागहारौ ददौ तस्य दत्तेय पृथिवीमिमं मन्दिरपि सूर्यैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सम्मानिता नरादोत्सै साट्टाः सम्मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमा पूरितं नव सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अमायताति महता प्रतिशब्दो महानमो चुचुबु सकललोका समुद्राश्च जगम्बिरे सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च मयीधरा जयति देवसमुदा तामुच्चु सिंहवाहिनीं सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् तुष्टुपुर्मुनय सैनं भक्तिनामात्ममूर्तय दृष्ट्वा चमसं संयुक्तं त्रैलोक्य ममरारय सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं सन्नद्ध सैन्यस्ते समुद्रस्थोदायुधा किमेतदिति क्रोधादावास्य महिषासुर सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अभेदावदत्तं शब्दमशेषैरसुरैर्वित सदनसतो देवीं व्याप्तलोकत्रयं दिशा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् पादाक्रान्त्या नत भूतभं किरीटोल्लिखिताम्बरं क्षोभितास्य पातालं धनुर्जानि स्वनेनताम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् दिशो भुजा सहस्रेण समस्ता व्याप्य संस्थितं ततः प्रभविते युद्धं तया दिव्यसुरद्विषम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् सतते बौद्ध मुक्तैरादि पीतदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुर सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् युधे समरसान्येत चतुरङ्गबलान्वित रतनामयुते षड्भिरुद्रगाख्यो महासुर सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अयोध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुं पञ्चाशद्भिश्चन्युतैरशीलोमा महासुर सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अयुतानां षड्भिर्भास्कलो युधेरणे गजबाजी सहस्रगैरनेकै परिवारित सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् विदुरथानां कट्या च युधे तस्मिन् युद्धत विरलाख्यो युधानां च पञ्चाशद्भिरतायुतै सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् युधे समिगे तत्र रथानां परिवारित यन्ने च तत्र सुजित सो रथनाग हयर्वृता सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् युयुधु समिगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि सहस्रैतो रथानां दन्तिनं तथा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् हयनं च वृतो युधे तत्राभुन् महिषासुर तोमरे बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् युयुधु समिगे दिव्या खड्गे परशुपटिशै केचित् चिचिभु शक्ति केचित् पाशा तथा परे सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतं हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् लीलैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रार्थवर्षिणी अनायस्थाना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि सोऽपि क्रुद्धदूतशटो दिव्यवाहनकेसरी सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशना निःश्वसन् मोहितयश्च युद्धमाना हरिम्बिका सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् त्वयैव सदेशं भूता गणा शतसहस्रश युधिष्ठे परशुभिर्बिन्दिपालाशिपटिशै सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् नाशयन्तु सुरगणं देवी शक्ति प्रब्रह्मिता अवादयन्त पट्टहान् गणसङ्घ तथा परे सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् खड्गादिभिश्च शतसु निजगानमासुरन् पातयामश्च चैवान्यन् घण्टास्वन विमोहितां सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्
असुरान भुवि पासेन बद्वा चान्यन कर्षयत् किचिद्युत किता तीक्ष्णे खड्गपातै तथा परि राधा प्रसमं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् विपोथिता निपातेन गदया भुगिसेरते विमुष्ट किचिदुधिरं मुसुलेन वृषमता सरबाधा प्रसमं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् केचिन्निपतिता भूमो भिन्ना शूलेन बक्षिसि निरन्तरा सरोघेणा कृता केचिद्रणाचिरे सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं स्वेनानुखायेण प्राणन् मुमुक्षिस्ते दशार्दना केषाञ्चित् भावश्चिन्ना छिन्नग्रीवा तथा परा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं श्रीरांसि पितुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जङ्गा स्वपरे पितुर्भे महासुरा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् एकबाह्यछि चरणा केचित् देवादिदा कृता छिन्नेपि चानि शिरसि पतिता पुनरुत्थिता सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं कबन्धा युधुर्देव्या गृहीत परमायुधा ननिदुप्सा परे तत्र युद्धे दुर्लया श्रुता सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं कबन्धास्थिन शिरस खड्गशक्तिष्टिपाणय तिष्ठति वासन्तो देवी मन्ये महासुरा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं पातितैरगनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्य सावमं तत्र यद्भूतसमारणा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं शोणितौगा महानद्य सद्यस्तत्र पशुश्रुभु मध्ये च सुरसैन्य च वारणासुरभाजिनां सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं क्षणेनात्यन् महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निनीचयं यथा वह्निस्तेन दारु महाचयं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं सचसिंहो महानाद मुत्सिजन् घृतकेसर शरीरव्यमरायणामसुनिव विचिन्नति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दिव्या गणेशस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथेषां तुतुसुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम हरि ओम। चामुण्डायै बिचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिचे। अथ तृतीयोऽध्याय ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् अथ जेदन्तीं त्रिनेत्रविलसद्वक्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धैमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। उदयकालका सूर्यका सहस्र कान्ति जस्तो कान्ति भएको रातो सारी पहिरेकी, गलामा खप्परको मुण्डमाला लगाएकी, दुवै स्तनमा रातो चन्दन लेपेकी, आफ्ना कर कमलले जपमाला विद्या अभय तथा वर नामक मुद्रा लिएकी, तीन नेत्र भएको मिखार बिन्दले शोभिएकी,
अर्ध चन्द्ररत्नले जडिएको मुकुट लाएकी कमलको आसनमा बसेकी देवीलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। ओम ऋषिर्वाच नियन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुर सेनानी शिशुर कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम् सर्वबाधा प्रशमनं दैलेकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सदेवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरेश्वर यथा मेरुगिरे सिंहं तोयवर्षेण तोयद सर्वबाधा प्रशमनं दैलेकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् तस्य चित्वा ततो देवी लीलैव सर्वोत्करान् जगान् स्तुरगान् बाणे यन्तारं चैव वाजिनां सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् चिच्छेद च दनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगै सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सच्छिन्नधन्व विरथो हत्वासु अथ सारथि अभिधावदत्तां देवीं खड्गचर्मधरो सुर सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सिंह मात्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवी मप्यति वेगवान् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल निर्पनन्दन ततो जग्राशूलं स कोपादर्णलोचन सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् चिक्षेप च ततस्तु भद्रकाल्यं महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् दृष्ट्वा तदा पतनशूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं सतदातेन नीतं स च महासुर सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतौ आजगाम गजारूढ सामर स्त्री दशार्दन सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ दिव्यास्ता ममिका दूतं ओंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् भग्नां शक्तिं निपतितां तिष्ट्वा क्रोध समन्वित चिक्षेप चामर शूलं बाणैस्तदपि चाचिनत् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ततः सिंह समुत्पत्य गज कुम्भाकन्धरेचित वायुधेन युधे तेन चैश्रै दशारिणा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् युद्धमानौ ततस्तौ तस्मान् नागान् मही गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणै सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मेघारिणा कर प्रहारेण शिरसामरस्य पृथक्कृतं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं मुद्रगस्सरणे दिव्या शिलाभिक्षा देवीहता दन्तमुष्टिस्थले चैव करालश्च निपातित सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं देवी क्रुद्धा गदा पाते शृणयामास चोदतं भास्कलं बिन्दिपालेन बाणिस्तां तथान्तकं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् उग्रस्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेता च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् विडालस्य सिनाकायत् पातयामास वै शिर दुर्धरं दुर्मुखं चौगौ सरे शून्यमक्षयम् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् एवं संख्यवाणितु ससैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तङ्गणान् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् कांस्यतुण्डप्रहारेण कुरोचेपि तथा परं लाङ्गुलटणेन सैन्यञ्चगाम्यां च विदारितान् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् वेगेन कांसितपरान्नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेन नान्यान् च वातयामास भूतले सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् निपात्य प्रमथानिकमव्यधावत शुशुर सिंहमन्तुं महादिव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम्
सूपी कोपान महावीर्य खुर छिन्न मैतल शङ्गाम्यां पर्वतानुच्चा चिक्षेप जननाद च सरबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं वेगभ्रमण विक्षुण्य मयि तस्य वशीर्यत लाङ्गुलेन हतश्चाद्विप्लावयामास सर्वतः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं रुद्रशृङ्ग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं येर्घना श्वासा निलास्त सतसु निपेतुर्नमसोचला सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् इति क्रोध समात्मात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा करोत् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सा चित्त तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याज मायिसं रूपं सुपिबद्धो महाविन्दे सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ततसिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्यां विकासेन छिनति तावत् पुरुष खड्गपाणिर दिशत सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तत्र सुगुन्महागज सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं कर्णेच महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षस्तस्तु करं देवीं खड्गेन निरकिन्तत सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ततो महासुरो भूयो मायिसं बगुरास्थित तथैव चोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् नन्ददा चासुरसोऽपि बलवीर्य मदोद्धत विषाणाम्यं च चिन्त्येव चण्डिकां प्रतिबोधनं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् साचतान् प्रणितास्तेन चूडयन्ति शरत्करे उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् हे मूढ म जबसम्म मधुपान गर्दछु तबसम्म त खुब गर्जी मेरो हातबाट यही तेरो मृत्यु भएपछि देवताहरू पनि चाँडै गर्दनेछन् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारुडातं महासुरं पादेन क्रमकण्ठे च शूलेनै नमताडयत् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ततः सुपीपदाकान्तस्तया निजमुखात् अर्धनिष्कान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृत सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् अर्धनिष्कान्त एवासौ युद्धमानु महासुर तया महासेना देव्या शिरचित्वा निपातित सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् तत्तु हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् तुष्टुपुष्टां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननितो चाप्सरोगणा ॐ सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् उवाच 3 श्लोक 41 एवं 44 एवं माति 217 हरि ओम। चामुण्डायै विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। अथ चतुर्थोऽध्याय ध्यानम्। ॐ कालाभ्रामं कटाक्षैर्रैकुलभयदं मौलिबन्धेन्दुरेखां
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां तेजसपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी कालो मेघको समान श्याम वर्ण भएकी आफ्ना कटाक्षले शत्रु समूहलाई भय दिने शिरमा अर्धचन्द्रमाको रेखाले शोभिएकी हातहरूले शङ्ख चक्र तरवार त्रिशूल पनि लिएकी 3 आँखाले शोभिएकी सिंहको काँधमा चढेकी सारा तिनै लोकलाई आफ्ना तेजले ढाकेकी देवताहरूले घेरिएकी सिद्धि चाहनेहरूले सेवा गरेकी जया नाम भएकी दुर्गा देवीकन सबैले ध्यान गर्छ। जय दुर्गा जय जया। ओम ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरादिबले च दिव्या तां तुष्टुभु प्रणतिनं रशिरोधरां सा भाग्वी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दिव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तमम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यं भक्त्या नतास्म विददातु शुभानिशानं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य नैवक्तुमलं बलं च स चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं यस्य स्वयं स्वीकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तदद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं हेतु समस्त जगतां कृणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं यस्या समस्ततुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी त्वासि वै पितृगणस्य चैत्रिहेतुर्प्रचार्यसे त्वमत एव जनैषदा च सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं यमुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैर्विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्य पदपाठपतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं मेधासी देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यन्तभूतं प्रलितमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य महिषासुरेण सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भृकुटीकरालमुद्यशशाङ्कसदृश छवियन् सद्य प्राणान् मुमुच महिषस्तदीव चित्रं कैर्देहि कुपितं तगदर्शनेन सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यतस्तमेतन्नितं बलं सुविबलं महिषासुरस्य सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं
तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्ग धन्यस्त एव निमित्तात्मजते तीर्थधारा येषां सदा विदयदा भवति प्रसन्ना सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यथा धृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदानं देवि तेन सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् दुर्गे स्मिता भरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्थै स्मिता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार्यकरणाय सदा दचिता सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इविर्हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्युति नूनमयितं विहंसि देवी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् निष्ठैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत् प्रहीणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्ति रिपपोभिः शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते सवितेति साध्वी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् खड्ग प्रभानिकर विष्णुरस्तुग्रैशूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो सुराणाम् यन्नागता विलयमं सुमतिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतं तदेतत् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् दुर्वृत्तवृत्तशवनं तव देवी शीलं रूपं तथैतविचिन्तमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रितदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेतं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् किनोपम भवतु ते स्वपराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति कुत्र चित्ते कृपा समरनिश्चित तदिष्टा त्वयैव देवै वरदे भुवनत्रयेऽपि सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन ततं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भवमप्यपास्तमस्माकं मुन्मन्दसुरारिभवं नमस्ते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् शूलेन पाइनो देवी पाई खड्गेन चाम्बिके घण्टासुरेण पाई चापजानि स्वरेण च सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् प्राच्यं रक्षपति चं च रक्षण्डिके रक्ष दक्षिणे बाणेनात्मशूलस्य उत्तरक्षं तदेश्वरी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सोमानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मस्तदा भवम् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् खड्गशूलगदा दिनि यानि चास्तानि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि तैरस्माद्रक्ष सर्वतः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ऋषिरुवाच एवं सुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नभवै अर्चिता जगतं धाति तथा गन्धानुलेपनै सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् भक्त्या समस्तैर्ति दर्शयति धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देवी वाच प्रियतां तिरसा सर्वे यदस्मत्तु विवाञ्छितं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् यदयं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयस्त्वया अस्माकं महेश्वरी सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् संस्कृता हिंसेता परमापद यश्च मध्यं पुष्पैरभिस्त्वं तुष्यत्यमलानने सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् तस्य विद्यार्थी विभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयेष्मत्प्रसन्नात्मं भवेत् सर्वदाम्बिके सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगदोर्थिस्तथात्मनः तथे दुग्ध भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति तत्कथितं भूप सम्भूता स यथा पुरा
देवी देव शरीरे जगत्रयैषिणी सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् बधायस्दैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तक्षणिष्व मया ख्यातं यथा वद कथयामि ते ह्रीं ॐ सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनन्थोरे देवी महात्म्ये शक्रादिर स्तुति नाम चतुर्थोऽध्याय उवाच 5 अर्धश्लोको 2 श्लोका 35 एवं 42 एवं 259 हरि ओम ओम देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपपति कुलानि नन्तुं शुभो प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्विप्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा ॐ देव्यै नमो नमः। सर्वै माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।